गाइस, अगर आपको ग्रोथ हार्मोन का मोस्ट इकोनॉमिकल बट ऑप्टिमल डोज जानना है देन कीप वाचिंग दिस वीडियो बिकॉज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू ब्रेक इट डाउन फॉर यू व्हाट इज द मोस्ट ऑप्टिमल and yet economical dose which you can take for the GH to get the maximum benefit from the dose, right? In this video, we are also going to break it down to you how much dose you need, आपको कितना डोज चाहिए और इनफैक्ट कितना डोज नहीं चाहिए, so that you don't unnecessarily waste money on the GH, right? Because we know GH or any peptide is very costly. So scientifically ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना डोज आपको एक्चुअली ज़रूरी है to get the maximum benefit out of the GH. So keep watching the video and we'll be back. Before starting the video, I want to make it very clear कि मैं यहाँ पे GH uses promote नहीं कर रहा हूँ. But after my last video on optimizing your intra and post workout nutrition for GH and IGF optimization, जो link यहाँ पे है, a lot of people ask me about what is the right doses or the doses they are taking. I was actually quite surprised, guys. आपको इतना डोज लेने की ज़रूरत नहीं है, okay? कितना लेना है डोजेस और कितनी बार लेना है वो डिपेंड करेगा आपके ऑब्जेक्टिव पे. व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, वेदर यू आर ट्राइंग टू लूज फैट, यू आर ट्राइंग टू और यू आर ट्राइंग टू गेन मसल, और आप बस लॉन्जिविटी ओल्ड एज के कारण ले रहे हैं, राइट? तो लोग इतना डोज ले रहे हैं तो आई वाज रियली वेरी सरप्राइज एंड ऑल्सो कंसर्न कि इतना डोज क्यों ले रहे हैं, बिकॉज इन द एंड यू विल एंड अप exerting your pancreas, जो मैं towards the end of the video will explain, right? Now, before we move on, let's understand कि GH क्या है, right? तो GH एक growth hormone है, which is a kind of protein or a polypeptide which is made up of 191 branch amino acids. तो ये आपका जो pituitary gland है, the somatotrope cells in the pituitary gland secretes the GH in response to a specific hormone released by the hypothalamus, which is GHRS. ये सारे मैंने concepts और everything मेरे last video में explain किया है. तो if you are interested in knowing कि how GH helps in fat burning and muscle building, please इस video को देख लीजिएगा. So I'm not going to go into that in this video. इस video में मैं बस doses के बारे में बात करने वाला हूँ कि कितना डोज आपको ज़रूरत है और कितना डोज आपको ज़रूरत नहीं है. Okay? So again, coming back to the main point in this video, कितना डोज आपको ज़रूरत है? It really depends कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. अगर आप बस फैट लॉस के लिए यूज कर रहे हो, ओके, तो इसमें आपको 2 to 2.5 IU मैक्सिमम, that is enough for your for fat loss. अगर again keeping in mind आपका diet, nutrition, workout, cardio, etc. on point है, okay? So everything, all of this aspect being on point, 2 to 2.5, अगर आप फीमेल हो तो मैक्सिमम 1.5 to 2, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है for fat loss. And what is the right time to take it for fat loss is immediately after waking up from bed. आपके फर्स्ट मील के पहले आप GH ले सकते हो, ओके? बट अगर आप कार्डियो करते हो सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक में, तो डोंट टेक इट बिफोर द कार्डियो, क्योंकि क्या होता है कि GH gets converted to IGF-1 in the liver and it might आपका blood sugar level drop हो सकता है, okay? For muscle building, how much do you need? Not more than 4 IU every day, okay? So आप क्या कर सकते हैं कि you can split it up 2 IU. 2 IU after the workout. मैंने अपने last video में explain किया है properly in detail कि how does it helps in hypertrophy or how GH helps in hypertrophy and hyperplasia. Basically GH goes, the liver processes the GH and converts it to something called IGF, which is insulin and growth factor, which helps in the increasing the size of the muscle. So
to have that maximum pulse after the workout and to have that longevity कि आपको एक अच्छा pulse मिले और आपको लंबा pulse मिले after the workout, that is where you should take it. Now, second dose आप कब लेंगे? It really depends on your age actually, I would say. मैं age क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप young हो, okay, तो आप क्या कर सकते हो कि आप सुबह मॉर्निंग में same like your fat loss which I say, आप उस टाइम पे ले सकते हो before your first meal, after your cardio, okay? अगर आप 35 प्लस हो और 40 प्लस हो तो एक स्टडी किया था साइंटिफिकली, they studied a lot of people, जिसमें ये देखा गया था कि जैसे आप एज होता है ऑब्वियसली आपका ग्रोथ हार्मोन का जो पल्स है और सिक्रेशन है वो कम हो जाता है, राइट? एक्चुअली ग्रोथ हार्मोन का मेन एसेंस क्या है मतलब ह्यूमन बॉडी में? इट्स बेसिकली ये बच्चों के ग्रोथ के लिए ये काफ़ी मतलब सीक्रेट होता है, ओके? क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट इन मसल बिल्डिंग, इट इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल आपके बोन ग्रोथ के लिए, कार्टिलेज के लिए, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? सो इसमें आप क्या कर सकते हो? तो उस स्टडी के बारे में बोल रहा था कि उस स्टडी में क्या हुआ था कि दे स्टडी और 35 प्लस टू 40, तो जनरली देखा गया कि आपका जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन है वो डिक्रीज हो गया था। और ग्रोथ हार्मोन बॉडी में जब आप स्लीप करते हो, आपका जो फर्स्ट साइकिल ऑफ डीप स्लीप होता है उसमें बहुत एक हाई पल्स ऑफ जीएच सीक्रेट होता है, ओके? सो दैट हैज बीन टेस्टेड एंड ये काफ़ी नोन फैक्ट है। सो बिकॉज it is at that point there is a huge pulse of GH, तो उसमें if you take an exogenous GH, आप अगर एक्सटर्नली बॉडी में लेते हो तो वो पल्स इज बेसिकली सबड्यूड, क्योंकि बॉडी को ऑलरेडी पता है कि यू हैव द GH, so it will not secrete the GH, ओके? तो आप एक्सटर्नली इसको सिमुलेट नहीं होने देंगे, ओके? तो अगर आप यंग हो और आपका स्लीप अच्छा है, so you want to take the maximum benefit of that pulse when you are sleeping. Okay, so you don't need to spend that additional GH on that. तो आप क्या कर सकते हो कि आप उसको सुबह ले लो, ओके? सुबह आप जैसे सेम फैट लॉस की तरह लेते हो तो आप ले लो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका फैट लॉस भी होगा और सेकंड आपका बॉडी इज इन द मोस्ट कैटाबोलिक स्टेट आफ्टर यू वेक अप, ओके? आप जब फर्स्ट व्हेन यू वेक अप इट्स इन कैटाबोलिक स्टेट, सो आप उसमें ऑगुमेंट करते हो, बॉडी को हेल्प करते हो टू मेंटेन दैट एनाबोलिक स्टेट। तो आप सुबह ले लो उसको, ऑलराइट? अगर आप 35 प्लस हो, ओके, तो उसमें आप ये मैं 4 आयु के बारे में बोल रहा हूँ, ओके? अगर आप 35 प्लस हो और आप 40 क्रॉस कर चुके हैं तो आप उसको रात को ले सकते हो, क्योंकि आपका ऑलरेडी पल्स इज ऑन अ डिक्लाइन, सो यू वांट टू यूज दैट in the night when you're sleeping. Night में क्यों? Because at that point the body is resting, you had a good workout, recovery is one of the most important factor while trying to build muscle. तो क्योंकि आप ऑलरेडी 40 प्लस हो चुके हैं, आपका पल्स नहीं है बॉडी में, तो यू आर गिविंग द बॉडी एक्स्ट्रा पल्स टू बी एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट स्ट्रेनस वर्कआउट, तो उसके लिए आपको काफी हेल्पफुल होगा, ओके? नाउ अगर आपके पास पैसा है एंड you have the money to spend it, you can go up to 6 IU, ठीक है? तो 6 IU, like 2 IU after you wake up, in the most catabolic state to cater that part, and also you help you a little bit of fat loss. 2 IU after you work out, immediately after you work out, to give that pulse of GH after you finish the workout, and also give that longevity, higher, longer pulse of GH. And third is before you sleep, right? So ये 6 IU split into 2 to 2 इतना काफी है, उससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है, okay? ना बहुत लोग बोलते हैं कि 12 आयु लेते हैं, 15 आयु लेते हैं। I was quite surprised with 12 आयु। ना इसमें क्या है कि एक चीज आपको ये देखना है कि आप 2 आयु से ज्यादा लेने का कोई फायदा नहीं है एक शॉट में। क्यों फायदा नहीं है? Because there is only a certain amount of GH which can be converted to IGF by the liver. Okay, आप ऐसा नहीं कि आप बस GH डालते जाओगे तो मतलब बॉडी लीवर आपके GH को everything will be converted from GH to IGF. वो नहीं होने वाला है, okay? So it's basically just a waste. And from different studies which you have seen कि आप ज़्यादा बढ़ाते जाओगे तो it's just a waste. And you have an optimal dose of 2 to 2.5 max, that is enough in every shot. तो उतना काफ़ी है, तो आप उतना उससे ज़्यादा आप ज़्यादा लोगे तो बेसिकली वो वेस्ट है। एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि यहाँ पे 2 आयु करके हमने स्प्लिट कर दिया है
टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। जिस टाइम पे बॉडी का जीएच रिस्पॉन्स कम है, जिस टाइम में आपको ज़्यादा पल चाहिए आपको आफ्टर द वर्कआउट, और रात में जब आपको रिकवर करने की जरूरत है। अगर आप बस लॉन्जेविटी, एजिंग और स्किन इस सब के लिए आप यूज़ करते हो, अगर कर रहे हो, तो 2IO इज मोर देन इनफ। लेकिन अगर आप वर्कआउट नहीं हो, मसल बिल्डिंग आपका इतना वो नहीं है, then the best time is to take it before you go to bed, okay? Because it will give you a good recovery, it will give you a good sleep, and it will also help in building your whole building your helping you in hyperplasia, और आपके जनरल जो आपका appearance और जनरल हेल्थ के लिए, एंटी एजिंग के लिए उसमें हेल्प करेगा, okay? So this is the entire doses आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से। One thing I want to point it out is more is not better, okay? Especially with GH. Let me explain why. आपका जो GH convert होता है liver में to IGF, the receptors for this IGF is same for insulin also, okay? आपके इंसुलिन और IGF-1 जो कि GH से कन्वर्ट होकर बनता है, उन दोनों का रिसेप्टर्स सेम है, okay? So both of IGF-1 and insulin, they will fight for going and binding to the receptors in the muscle cells, liver में, brain में, all of these organs. So अभी क्या होता है, इंसुलिन का क्या काम है? अगर आप इंसुलिन लेते हो, इंसुलिन पैंक्रियास से सीक्रेट होता है, पर उसका वो सीक्रेट इसलिए होता है क्योंकि बॉडी का नेचुरल रेस्पॉन्स है, whenever you take any sweets or any glucose or any carbs, once it gets digested into glucose, आपका ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो पैंक्रियास क्या करता है, ऑब्वियसली अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत हाई रहेगा, तो इट्स गोना अफेक्ट यू इन cause lot of damage to the body. तो इसलिए the insulin, the pancreas will release the insulin in the bloodstream. It will take all the glucose from the blood and settle it and store it in the liver, in the muscle, in the brain, etc. And whatever is not there is going to get deposited as a fat. Okay? Now you imagine आप GH का डोज बहुत ज़्यादा ले रहे हो, okay? तो IGF में वो कन्वर्ट होता है, and then आप it starts to fight for the receptors, और आप मसल बिल्डिंग फेज में हो जहाँ पे आप बहुत कैलोरीज खा रहे हो, बहुत कार्ब्स खा रहे हो, ओके? तो नाउ व्हाट विल हैपन, आप कार्ब्स खाते हो, इंसुलिन स्पाइक होगा, बॉडी विल रिलीज द पैंक्रियास विल रिलीज द इंसुलिन इन द ब्लड स्ट्रीम, राइट? बट इमेजिन आप जीएच का डोज इतना बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो जीएच दे आर गोइंग टू टेक सम ऑफ द रिसेप्टर्स फ्रॉम द मसल सेल्स। तो नाउ आपका जो ब्लड शुगर लेवल है, that is not going to change because IGF has already taken it, right? तो आपका बॉडी को क्या लगेगा, पैंक्रियास को क्या लगेगा, यार मैंने इतना रिलीज किया अभी तक, मतलब ब्लड का लेवल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है, तो इंक्रीज विल डू पैंक्रियास विल डू व्हाट, इट विल सीक्रेट अनदर, इट विल ट्राई टू कीप ऑन सीक्रेटिंग more and more to bring the blood glucose level down. So you are not helping because now आपका पैंक्रियास is over exerting, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है to take all this glucose, which is trying to shuttle it, but उसके लिए shuttle करने के लिए कुछ जगह ही नहीं है because it's already, the receptors are already taken by IGF, right? So you are overburning your pancreas, and if you keep on doing it, eventually your pancreas will fail, okay? And then you end up having diabetes, one type of diabetes. तो इसलिए do not, अगर आपका कोच या कोई भी हो बहुत ज़्यादा डोज सब्सक्राइब कर रहा है, that's not advisable, okay? तो 2IU per shots, 4 से 6IU मसल बिल्डिंग के लिए, फैट लॉस के लिए 2IU, और 2IU for general anti-aging purpose के लिए enough है, okay? So I hope this clarifies a lot of doubt, guys. Please अगर आपको कोई भी बहुत ज़्यादा डोज देता है, I was quite very surprised, young guys taking so many doses. It is not recommended to take that many doses. As long as please try to understand the last video देखिए, उसमें if you try to understand the logic, you will get it कि यार इतनी ज़रूरत है नहीं, right? तो आप you can still get the maximum benefit out of the GH by taking minimum, right? So that is what the objective should be. I mean, you should be getting you should be trying to get the maximum benefit from the minimum dose, okay? So yeah, that's it from my side. अगर आपके पास और भी query होती है तो please shoot me
It was quite good to see your feedback and some queries जो लोगों ने पूछे मेरे को, which is why I decided to do this video. I hope I'm able to clear some of your doubts. So yeah, that's it for today. Keep watching the video, keep watching the channel, and we'll be back with another video next time. Till then, bye.